Hello friends, my name is Rajan. Thumbs up, thumbs down below, share and subscribe and slap like on the bell icon to get my future videos updates regularly. दोस्तों लाइक कर दो, शेयर कर दो, है ना, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन की घंटी पे क्लिक कर दो ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स लगातार मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो गाइज जैसा आपको मालूम है मैं डेटिंग और फ्लर्टिंग टिप्स पे वीडियोस बनाता हूँ, है ना। और जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें जो कंटेंट रहता है मेरा, जो पहले मैं उसको हिंदी में बोलता हूँ, सॉरी, फिर मैं इंग्लिश में बोलता हूँ उसको, है ना, ताकि आपको साथ इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश सीखने में भी हेल्प मिले, है ना। फ्लर्टिंग और डेटिंग टिप्स तो आप सीख ही रहे हो फ्री में, है ना। सो गाइज लाइक आई मेक वीडियोज ऑन फ्लर्टिंग एंड डेटिंग टिप्स. So in the same particular video, I try to deliver the content first in Hindi language, and then I repeat the same conversation in English language in order for you to learn some spoken English, as well as of course learning flirting and dating tips for free. So guys, let's get started first in Hindi language. तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है ना। तो आज का टॉपिक है भाई, जैसे मैंने आपको पुराने वीडियोस में आपको मालूम ही है ना, सब कुछ सिखाया है आपको डिटेल में। अगर आप नहीं देखा है तो आप पीछे जाके देख सकते हो। मैंने आपको आई कांटेक्ट, है ना, बॉडी लैंग्वेज और आपकी स्माइल से कैसे आपको अट्रैक्ट करना है, लड़कियों को सेड्यूस करना है ना, और वगैरह वगैरह वो मैंने आपको सिखा चुका है। तो आज हम एक स्टेप फर्दर जाएंगे, है ना। So guys, in my previous videos, I taught you, the art of seduction, how to approach a girl using your eye contact, your flirtatious smile, and of course your body language to your advantage. So in this particular video, we'll go a step further, so guys, without further ado, let's get started first in Hindi language. तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कॉपिंग। जी हाँ, आपने सही सुना है, कॉपिंग। तो कॉपिंग क्या होता है भाई? देखो, ये भी इसकी एक लिमिटेशंस होती हैं। ये भी एक फ्लर्टिंग और डेटिंग की टिप्स है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। पहले हम लिमिटेशंस पे ही चलते हैं ना। लिमिटेशंस ये है कि भाई आपको मिनिमम 20 मिनट, 10 मिनट पकड़ लो, 10-20 मिनट या उससे ज़्यादा टाइम आपको चाहिए कि लड़की आपके सामने बैठी रहे, है ना। तो हमें ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करनी है, या फिर हमें मिलती है भगवान की दुआ से, तो हमें उसका एडवांटेज उठाना है ना। तो कई बार क्या होता है, हम किसी लड़की को देखते हैं, वो पलक झपकते ही गायब हो जाती है। लेकिन हमारे पास कई कई अच्छे अच्छे मौके भी आते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करो कि भाई आपने दिल्ली से मुंबई जाना है ना, फ्लाइट में आप वेट कर रहे हो, तो आपका क्या बोर्डिंग पास वगैरह ले लिया आपने, है ना। तो आपको चाहते हुए या ना चाहते हुए भी, है ना, आपको आधा एक घंटा वेट करना पड़ता है। फ्लाइट में एक वेटिंग रूम असाइन होता है, तो फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले। तो वहाँ आपको अगर आपको कोई खूबसूरत लड़की दिख जाए, तो भाई वो लड़की चाहते या ना चाहते हुए भी आपको उसे बेयर करना पड़ेगा, और आपको भी उनको बेयर करना पड़ेगा। तो जो वो फ्लाइट के पैसेंजर्स होते हैं वो एक जगह बैठते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो मैंने अपनी टिप्स और ट्रिक्स जो सिखाई हैं, आई कांटेक्ट वगैरह, बॉडी लैंग्वेज, वो तो यूज़ करनी है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया आपको 20 मिनट से ज़्यादा का टाइम मिल गया वहाँ पर स्टेयर करने का। तो आपको सबसे पहले ये करना है, उस लड़की के ठीक सामने बैठ जाना है। अगर सीट नहीं है उसके सामने तो खड़े हो जाना है, मतलब कैसे भी करके उसकी आपको आंखों के सामने रहना है, तभी तो आप खेल पाओगे ना आई कांटेक्ट वगैरह बॉडी लैंग्वेज से, है ना। उसको स्टेयर करना है। अच्छा, अब क्या है, हमारे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है ना, 20 मिनट है या सपोज करो आधा घंटा है। तो हम लोगों को क्या करना है भाई, हम लोगों को उसको स्टेयर करना है पहले तो, है ना, स्माइल वगैरह पास करना है। दूसरी बात क्या है, हमको कॉपी करना है, जो आज की ट्रिक है। तो आपने दोस्तों बंदरों को देखा होगा, तो बंदर क्या करते हैं, इंसान की कॉपी करते हैं। आपने उसको ऊपर उठा के अगर कुछ केला फेंक दिया, तो वो केला आपको उठा के वो भी फेंक देगा वापस। बंदरों की आदत होती है, मतलब वो कॉपी करते हैं इंसान की, या कोई भी, मतलब किसी की भी कॉपी करते हैं, आपस में भी करते हैं वो कॉपी। तो हम भी भाई बंदरों के ही हम भी वंशज हैं, तो हमारे अंदर भी वो ऑटोमेटिक गुण आ ही गया है ना। तो बंदर जैसे कॉपी करते हैं, आपको बंदर बन जाना है। अब वहाँ पर जैसे मान लो कोई लड़की है, वो स्क्रैच, खुजली उठ रही है गालों पे, है ना, ऐसे ऐसे कर रही है वो, तो आप स्माइल तो करो ही साथ साथ, है ना, देखो उसको जैसे मैंने सिखाया, और साथ में आप भी कॉपी करो, खुजली उठाओ से। वो नाक पे खुजली उठा रही है, आप भी नाक पे खुजली उठाओ ना। अब वो सपोज उसको नींद आ रही है ना, ऐसे कर रही है, उजवाई ले रही है, यार नींद आ रही है, तो आप भी उसको कॉपी करो ठीक उसकी तरह, नींद आ रही है ना। तो उससे क्या होएगा, मतलब वो देर सवेर वो आपको मतलब जरूर नोटिस करेगी, और आपको वही तो करना है, आपको उसका अटेंशन ग्रैब करना है ना।
तो वो सपोज नाक में भी उंगली डालती है ना, तो वो भी आप भी नाक में उंगली डाल दो, हंसते रहो मतलब बीच में, हंसना कोई गुनाह नहीं है ना। अब क्या देखो, बहुत से लोग बोलेंगे भाई वो चिढ़ जाएगी, चिढ़ सकती है, लेकिन क्या है भाई, आप कोई गुनाह तो नहीं कर रहे हो, कोई क्राइम तो नहीं कर रहे हो ना, आप किसी को छेड़ तो नहीं रहे, कुछ तो नहीं कर रहे हो, आप तो खाली कॉपी कर रहे हो सामने वाले को और हंसा रहे हो। तो आपको एक ये जो पूरा इंसिडेंस आपको लेके चलना है ना, इसको एक मजाकिया तौर पे लेके चलना है ना। तो अब क्या होएगा, लड़की हो सकता है लड़की हंस दे आपके ऊपर, अपना आप कॉपी कर रहे हो उसकी बहुत बुरी तरह, सपोज वो खांस रही है आप भी खांस रहे हो, तो मतलब 10 मिनट 15 मिनट थोड़ी देर वो देखेगी, लेकिन उसके मुंह से ऑटोमेटिकली, अगर वो अच्छे मूड में हुई तो नहीं भी हुई तो भी शायद उसको हंसी आ जाएगी, है ना। और अगर वो हंसगी ना, तो ये मत सोचो कि भाई हंसी हंसगी तो फंसगी, कहावत भी है ना, हंसी तो फंसी। वो एक्चुअली आपके ऊपर आप आपके कैरेक्टर के ऊपर हंस रही है ना। वो आपको देख के ऐसा नहीं इम्प्रेस होगी, हो सकता है इम्प्रेस हो जाए तो और अच्छी बात है, शॉर्टकट में काम हो जाए, लेकिन आपको इतनी जल्दी मतलब सेलिब्रेशन नहीं करनी है कि भाई लड़की पड़ गई है। वो हंसी ना, तो आपको एक तरीके से आइस ब्रेकर होता है ना, एक आपको बात करने का एक वो मिल गया, क्या बोलते हैं कि आपको बात करने का एक वो मिल गया, रीज़न मिल गया है ना, कि मैं बात कर सकता हूँ, उसने आपको स्माइल करी। अब कई बार लड़की क्या होती है, बोर हो रही है, सोचती है कुछ मैगजीन उठा लूँ, न्यूज़पेपर उठा लूँ, या कॉफ़ी पी लूँ, पास में वेटिंग रूम में होता है ना। और ये मतलब मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि आप फ्लाइट की वेट कर रहे हो, वहाँ कर सकते हो आप ये, ट्रेन कंपार्टमेंट में भी कर सकते हो। सपोज आप ट्रेन में जा रहे हो, तो कई बार ट्रेन में तो एक एक दिन तक एक ही बोगी में आदमी को करना पड़ता है ना, एक दूसरे को बेयर करना पड़ता है। तो अगर आप ट्रेन में जा रहे हो, आपके कोच में कोई लड़की है, तो वहाँ भी आप ट्रिक यूज़ कर सकते हो ना। और अगर आप कहीं कॉफ़ी शॉप पे बैठे हो तो वहाँ भी यूज़ कर सकते हो। मतलब आपको थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए और कुछ नहीं। चलो हम वापस चलते हैं अपनी बात पे। तो ठीक है, अब वो जैसे कॉफ़ी लेने के लिए गई है, चाय लेने के लिए गई है ना कैफेटेरिया में, या वॉशरूम गई है ना, तो अपनी जगह से उठ गई, तो आप जाके उससे फिर, जैसे मैंने आपको सिखाया है अपने प्रेजेंटेशन वाले स्किल्स में, नहीं देखा तो वीडियो देख लेना कैसे आपको अप्रोच करना है उनको। तो आप जाके उनसे फिर कॉन्फिडेंटली हैंडशेक करो, और जो मैंने सिखाया मतलब वैसे जाके उनसे बात वगैरह कर लो। अगर आपको फ़ोन नंबर मिलता है तो बहुत अच्छा है। तो ये बहुत पावरफुल टेक्निक है दोस्तों, बहुत एडवांस लेवल की एक्चुअली टेक्निक है ना। इसमें कुछ वार्निंग्स भी है, अगर आगे लड़की बुरा मान जाए तो आपको वहीं रुक जाना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि आगे बढ़ना है। पर ज़्यादा करके कि ये वाली ट्रिक में ना लड़की ऑफेंड कर जाए तो बहुत कम चांसेस है, क्योंकि आप भाई किसी को हंसा रहे हो, है ना, आप उसकी कॉपी कर रहे हो, मिमिक्री कर रहे हो, उसकी नकल कर रहे हो। तो भाई इंसान ऐसे, अगर आप इंसान हो तो इंसान तो भाई किसी की नकल करता है तो हंसी तो आएगी ना। तो ये थोड़ा सा लाइट ह्यूमरस वे में रखना है, आपको सीरियस नहीं होना है ना, मजाक के तौर पे करना है ना। हाँ, उसका नाम वाम पूछ लो, फिर हाय हेलो, है ना, ऐसे करके फिर तो आपकी वो फ़ोन नंबर मिल जाए अपने तरीके से। फिर मैंने आपको सिखा ही रखे हैं कैसे आपको अपने रिलेशन को आगे लेके जाना है ना, कैसे भी करके उसका फ़ोन नंबर वगैरह या कुछ ग्रैब करो, है ना। तो चलो दोस्तों, फिर ये ट्रिक मैं अभी इंग्लिश में सिखाता हूँ आपको। Today's tip will be like, it's called copying. It's a very powerful technique, first of all. And in this technique, you have to use my tips and tricks which I taught you in my previous videos. Like I taught you how to approach a girl, how to seduce a girl using your eye contact, your flirtatious smile, and your body language to your advantage. Of course, you have to use, it is the universal or the general techniques, but this is quite specific technique. It's called copying, and it's a very powerful technique, like I said. So what you have to do is, this is actually this tip has its limitations also. So first let's discuss the limitations. The limitations are like, you need minimum 20 minutes or maybe more than that, but minimum 20 minutes you need. Or if you have the authority of time, more than 20 minutes, if you can afford more than 20 minutes, then it's good for you. So you have to look for the opportunity, or you have to create, or if you, by the God grace, if you are lucky enough to be in that particular situation, like which I will be discussing. For example, the situations could be, if you are caught in a situations like, if you suppose you have when you are, suppose you are boarding a plane from, you have a flight from Delhi to Mumbai. So before the plane is about, the plane is about to take off. So before that, once you take your boarding pass, there is some time you have to wait in a waiting room before the flight could take off. So in some situations it could be 20 minutes, in some situations it could be an hour or maybe more. So you have got a little more time to express yourselves,
So it could be anywhere. I was just giving example of a flight. It could be, you are traveling. It could be if you are traveling by a train, and there is a beautiful chick or a girl, right beside you, or in your coach or compartment. So it automatically, it gives you the same situation. So we have to look for the same situation. So like I said, suppose you are taking a flight from Delhi to Mumbai, and you are waiting for a girl, and then what you have to do is first thing first, you have to situate yourself right in front of her eyes, not beside, not behind, always, when she's waiting, and you're having like a luxury to wait for half an hour and maybe more, and you saw a beautiful chick and a girl, and you're eyeing that girl. So what you can do, first of all, you have to situate yourself right in front of her eyes. Then you have to use the techniques which I taught in my previous videos. If you haven't seen those videos, please go back and check those videos. So you can use your eye contact, your flirtatious smile, your body language. That is must. Okay, but after that, that was a general technique. You are getting you are getting the liberty to express more. So you are getting like 20 minutes or 30 minutes more. So how you can utilize it is by a very powerful technique. Like I said, it's called copying. Copying is nothing like you have to mimic the person you are you have a crush on. You have to mimic her, just like a monkey. You must have seen monkey imitating you, or must have seen. So you have to become like a monkey. If suppose that girl you are eyeing is scratching her nose, so you also have to scratch your nose, and she's scratching her cheeks, or maybe she is yawning, so you also have to yawn. If she's coughing, then you also have to cough. So I mean, you have to gather your attention. I mean, you have to get your attention, you have to get her attention on you. Then only things will get starting turning in your favor. So first of all, why this technique is so powerful is because people using this technique, the chances of her getting offended is very less, unless and until she is in a very bad mood. But if she is also in a good mood, or maybe not in a normal mood, then also it's quite likely that at one point you're copying her again and again. She might notice, if she gets if you are able to get the attention towards yourself, of her towards yourself, then the chances are that she will grin or she will laugh at you. But you don't have to presume that girl is smiling back at me because I'm able to seduce her. It is not, by God's grace. If it is, it is good for you. But if she is not seduced, she is not seduced by your act. She may have laughed at you because you are just like a clown. Girls laugh at jokers, clowns, the comedians, the stand-up comedians. So she, because you imitated her, you imitated her act. And if suppose she's putting her fingers inside her nostrils, and you are also copying her, so these kind of acts, it's quite possible that she'll grin or laugh at you. So basically she is laughing at your character. So guys, then there is, but what this has done is, it has broken the icebreaker. So now you have got that, because she's laughing at you. You have made a certain connection. So that connection is very good for bonding. So if she gets up to buy a coffee, or to sip a coffee or a tea, or maybe she gets up from her seat to go to a washroom, or to pick some newspaper or magazines, so you can follow her, and now because she has smiled at you, you have made some kind of a connection. So you can introduce yourself, like I taught you in my previous videos of presentations. If you haven't seen that video, you go back and check that video. How to use how to approach a girl using your presentation skills. So you can
have a confident handshake with her, and then you can introduce yourself, and then you can grab her phone number. So then the chances of meeting, chances are there that she will not no more be a stranger to you, and you both can have, it depends upon you, how you behave in front of her. So all the best, guys. This was the trick called copying. It's a very powerful technique, and why I like this technique is because the chances of her getting offended is very less, because you're not committing any crime, you're making a person laugh at you, so you are kind of creating a comedy. So by if somebody is laughing at you, it is not a crime. So गाइज कमेंट में बिलो दोस्तों, कमेंट करके बताओ आज का वीडियो कैसा लगा, है ना। मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, है ना। और बस ऐसे ही अपना प्यार निछावर करते रहो, है ना। टिल देन गाइज, गुड बाय, टेक केयर।